Design Biennale 2023 from 9th to 15th December at Red Fort. To brief you about this program, we have with us Honorable Minister of State for Culture and External Affairs, Shrimati Minakshi, and Joint Secretary, Ministry of Culture, Shrimati Mugdha Sinha. First, the Honorable Minister will brief you about this program, and after that, Joint Secretary will make a presentation, and after that, you can ask questions relating to this program. Now, I would request the Minister to brief you about this program. Good morning, everyone, and post Diwali, this is the Festival Dhamaka. The Festival Dhamaka is about art, architecture, and design. Indians for centuries have been the most creative people on this planet, and yet we've not really learned to sell our products. We were always busy working at the craft, and others were selling our products. Now I think it's time that as part of the government, we try and encourage people who can also sell their craft and showcase it right, exhibit it right. And for this reason, we've started this Biennale. This is going to be the first ever edition by Government of India. There are several Biennales which have started across the globe. Venice, of course, is one of the most famous ones. But in addition to Venice, there is Sao Paulo, which is happening, Berlin, Dubai, and there are always cultural spaces which are there, and every creative city, every city needs to have creative space, and those spaces need to be occupied by people. Delhi, for example, or all the other 5 metros have various spaces, but unfortunately the crowd pulling is not happening the way it should happen. So there's a certain amount of sensitization program also for the public at large, and that sensitization will go a long way in protecting our heritage and creative spaces. Biennale is going to offer creative spaces to creative people. As of now, through crowdsourcing, we've got 560 inquiries, 260 artists have applied, and out of which the creative artworks which have been selected exceed 260, because each artist would have submitted more than one. And in addition to this, 150 artists or so have been shortlisted by the team. And there are 7 days. The program runs in 7 days, and there are 7 themes for 7 days. One of my favorite one is doors, gates, and cities. And why I would say this is interesting, that we all look at cities being overcrowded, too occupied, too many people. But the theme of doors and gates, doors and windows, is something which I feel doors is outward looking and door is inward looking and windows are outward looking. So both outward and inward interaction that happens in the cities is the way forward, and thus most of the cities in old times used to have gates and gated community so that people could protect, people could conserve and savor their art forms. That is one. Then there is another which is called, this is called Pravesh, rites of passage. So every city would tax you to go in and come out and carry the traditions forward. So there's a historicity attached to this particular scene. The second is Baghe Bahar. Now you would recognize the fact that, of course, the curated gardens of Europe are much talked about, but India has a history of gardens, and history as in temples, palaces, much before medieval times and much beyond 400-500 years. The gardens which were severed by Indian civilization is something to talk about. So again, historical perspective with the modern curated gardens, and thus Baghe Bahar, and that engulfs mythology, belief system, so on and so forth, which is a conversation around gardens. Samprava, and Samprava is confluence of Samprava, you can follow it from the Sanskrit or the Hindi word, Prava of everything, Prava of every thought,
sangam, confluence of various aspects. So communities come together and discuss their contribution in art, culture, and climate ecosystems. Then Satpate, which is anti-fragile algorithm. We all know that how, in spite of challenges, the ancient architecture of India has existed even till date. So, city planning from Mohenjo-daro, Harappa, Kalibanga, and several other cities across the country have survived in one form or the other, and many have survived on top of the earlier existing civilization. Purana Killa, for example, being part of Delhi, but Indraprastha existed at this very spot for many earlier times. And Satpatha is basically that algorithm which is talking about structures which have stayed beyond their times. And let's talk about these structures. And it's a cultural portal. Then Vismay, as we all understand, crossovers. There's a myth associated with it. There is a entrapment associated with it, and this is modern and post-independent architecture. Deshaj is Bharat Designs, which is contemporary face of indigenous art and design traditions of India. And this is also important that post-independence and little before independence and even contemporary, day to day, they are beautiful architectural buildings. If we do not secure them, they are beautiful pieces of art and craft. If we do not secure them, this very contemporary art and artistic form will become antiquated at some point in time. So history needs to be preserved, even present history needs to be preserved. For that purpose, Deshaj becomes important. And Samatva is shaping the build, which means the social design collaborations, and this is also a cultural portal. There are going to be several keynote speakers, experts in their respective fields. I'm not going into the detail. Many countries have sent their entries, mostly coming from US, Italy, and Netherlands and other places. There are panel discussions on art, architecture, and design. There are workshops and very interesting workshops which are curated thematically: Harvard, Ikebana, Kintsugi, Tanjore, Origami, Gond, Bhil, Madhubani. So these are, I wish a whole lot of us can join these workshops and sharpen our creative talents. And there are going to be open calls for artists for submitting their exhibition. There's going to be also student Biennale. Many art and craft students, this is called Samunati, Unnati, which is Barabar ka Unnati or Barabar se Unnati. So even students get an exposure at an early age, how to participate, curate their work, and also get an international exposure for developing their art and exhibit forms. Again, this will also involve dialogues, discussion, and conference. Public art aiming to enrich communities. So we are going to identify who have contributed to community living, and there's Startup Foundation India and Memeraki. Art Bazaar, there can be no Biennale without the bazaar, so there's going to be Art Bazaar. Small, big businesses can interact with each other for selling their merchandise, and others who can participate in purchasing the merchandise. And there's going to be business to business space, and there's going to be a general public space for this particular Art Bazaar. And Atmanirbhar Bharat Center for Design, this is an initiative facilitating Indian design and innovation, celebrating the rich, diverse handicrafts of India. Each of these 7 days and 7 themes are curated by some very eminent architects and design curators. Each is curated by a different person. For example, Pravesh is being curated by Aditya Arya. If any of you
who's familiar with Gurgaon would have seen this museum center in Haryana. He's the one who's curating this particular theme, Pravesh, Rites of Passage. Baghe Bahar, as I talked earlier, is being curated by Anchita Nair, who's CEO of Kutur. And then Samprava is being curated by Ritesh Nanda, famous Aga Khan Foundation. Then Sthapatya is being curated by Amit Pasricha. And this also is very, very interesting because he's someone who's founder of India Lost and Found. I think the very theme of Biennale is India Lost and Found because India, in true sense, never got lost. It continued working silently, but lost in public eye, and thus focusing on exhibiting our strength is where we feel the contribution of media and friends from the media will go a long way in sensitizing people and taking the theme forward. So India lost in public perception, it was always there, and we are trying to find it back in the greater imaginary of people, both within and outside the country. Vismay is being curated by Shikha Jain, who's the founder of Drona, and then Desaj is being curated by Anubhav Nath, founder of Ojas Arts. Then Samatva is being curated by Swati Janu. This is for the in terms of fact sheet. अभी जो कुछ मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया वो भारत सरकार ने खास तौर पे संस्कृति मंत्रालय ने पहली शुरुआत की है एक डिजाइन आर्किटेक्ट बनाने की, और वो पहली शुरुआत इसलिए है कि दुनिया भर में विभिन्न देशों के अंदर बिनाले होते हैं। वेनिस बहुत प्रमुख है, अभी जेदा में शुरू हो रहा है, साओ paulo में हो रहा है, और दुबई में है, बर्लिन में है, तमाम देश जो है उनमें बिनाले हैं। हमारी एक प्रयास है कि जो सांस्कृतिक या कल्चर डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ाने का, कि देश भर का जो आर्ट आर्किटेक्चर है वो अन्य स्थानों पर पार्टिसिपेट करे और देश दुनिया के जो लोग हैं वो भारत में आकर भारत की जो डिजाइन आर्ट आर्किटेक्चर की शैली है उससे परिचित हो। और जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने हर चैलेंज के बाद, हर मुश्किल के बावजूद अपनी आर्ट फॉर्म को जीवित रखा है, और उसको जिन्होंने जीवित रखा उन सबको रिकग्निशन देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तकरीबन 560 हमारे पास इंक्वायरी आई है और 260 के आसपास जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने सबमिशन जो है भारत सरकार को सबमिट किए हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक जो टीम है उसने 150 के आसपास आर्टिस्ट को चुना है और 260 से ऊपर कलाकृतियों को चुना है। 7 दिन 7 अलग अलग थीम और अलग अलग 7 विचार, और साथ ही इसके एग्जीबिशन स्पेसेस होंगे। इसमें एक जो है उसका नाम प्रवेश है एक थीम का, दूसरा नाम बागे बहार है, संप्रभा है, स्थापत्य है, विस्मय है, देशज है और समत्व है। और इसमें जो छात्र है उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। विभिन्न जो विषय है उनके ऊपर जो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, वो आके डिस्कस करेंगे। और भारत का जो एक डिप्लोमेटिक कॉर्नर है आर्ट और क्राफ्ट और कल्चर का, उसको हमने दुनिया भर में पहुंचाने का जो है वो एक ये प्रयास है, और इस प्रयास में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि एक क्यूरेटर जो है वो फाउंडर है एक अपनी फाउंडेशन के जिसका नाम है इंडिया लॉस्ट एंड फाउंड। मुझे लगता है कि इस बिनाले के प्रयास के पीछे यही प्रयास है कि जो भारत खोया तो नहीं था लेकिन कहीं छुप गया था, और जो धूल हमारे आर्ट के प्रति एक तरीके से कहना चाहिए निग्लेक्ट आया है, उसको दूर करने के लिए और वापस उसकी जो चमक है वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए
ये एक प्रयास है जिसमें जो विमेन आर्टिस्ट, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है आजकल भी जिन्होंने काम किया है, हमारा एक इतिहास है, उस इतिहास के साथ आगे बढ़ने का जो काम है कि पूरे देश दुनिया में लोगों की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़े, और हर शहर के अंदर, हर मेट्रो में, दुनिया भर में क्रिएटिव स्पेसेस होते हैं, और उन क्रिएटिव स्पेसेस की वजह से वो शहर जाना जाता है। अधिक से अधिक लोग इन क्रिएटिव स्पेसेस में पहुंचे, म्यूजियम्स, गैलरीज, उनके स्थान हो जहां वो चाय पीने के लिए या रविवार छुट्टी मनाने के लिए, शनिवार वीकेंड्स पे घूमने के लिए, बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए, विभिन्न आर्टिस्ट जो अपनी, हर व्यक्ति के अंदर आर्ट छुपा है। अगर कोई वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता है, वीकेंड वर्कशॉप जाना चाहता है, घंटे 2 घंटे देना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए भी वो जगह उपलब्ध हो। हम लोगों का प्रयास है कि इस एक ये माध्यम बने पूरे देश दुनिया के आर्ट कलाकृतियों को और दुनिया को जोड़ने का, और जो भारत की परंपराएं हैं उससे सब अवगत हो। और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तो अब जब भारत विकास की तरफ बढ़ चुका है तो अपनी विरासत को ना भूले, और नए तौर तरीके जो विकास के हैं उन सब तौर तरीकों को इस्तेमाल करते हुए विरासत को जीवित रखने हुए और आगे बढ़ने का ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और इस प्रयास में आप सब भागीदार बने, हमारे साथ जुड़े और हमारे विचारों को और ऐसे तमाम आर्टिस्ट को देश दुनिया में ले जाने का काम करें। इसी के साथ आपका आभार, धन्यवाद। कोई आपके प्रश्न है तो मैं लेना चाहूंगी। पहले ये मैंने बिनाले होता था तो उसको वो डिसकंटिन्यू हो गया, फिर ये बिनाले क्यों शुरू हुई हम जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे प्राइवेट लोग कुछ चीजें शुरू करते हैं और वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल ड्रिवन होती है। तो इंडिविजुअल जब तक है, जब तक उनका इंटरेस्ट है या शरीर काम कर रहा है, तब तक वो चीजें रहती है। लेकिन अब हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके सरकारी तौर पे इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ललित कला अकादमी करती थी। नहीं, ललित कला अकादमी एक एकेडमी है भारत सरकार के नीचे, लेकिन अब संस्कृति मंत्रालय कर रहा है जिसमें ललित कला अकादमी की भी भागीदारी रहने वाली है। तो आप उसका स्केल और तरीका थोड़ा सा भिन्न हुआ है। एक सवाल और है कि घर की देहरी से किले की प्राचीर तक निकल करके आ रहा है, क्या खोया क्या पाया ये भी है। बादलों की ओट में सब कुछ छिप गया था जी, उसको निकाल रहे हैं। लेकिन आज जो है परिवार को इसमें किसी तरह से जोड़ा गया है। कोई ऐसे परिवार भी रखे गए हैं जो कला के प्रति समर्पित हैं, कोई परिवार ऐसे जो घरों की डेहरी से ही सारा काम आरंभ हो रहा है। जैसे शुरुआत हो रही कला की, देखिए वो बढ़ती चली गई यहाँ तक। आपने बहुत अपने प्रश्न में ही आपने उत्तर दे दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो परंपराएं जीवित रही इस देश में, वो पेट्रन्स के अभाव में भी जीवित रही, क्योंकि बहुत सारे परिवारों का सहयोग रहा और ऐसे बहुत सारे मास्टर्स, गुरु रहे जिन्होंने इस कला को आगे बढ़ाया। और उस परिवार में केवल बहन, भाई, बेटा, बेटी ही नहीं, बल्कि उनके जो छात्र हैं वो भी परिवार का ही हिस्सा है। गुरु शिष्य परंपरा इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है। तो ऐसे तमाम लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है और वो आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा। फर्स्ट रश to see the Biennale, and that's where I need your support and your help, because the more you publicize it, the more people get to understand it, the more people come there, it will create creative spaces in the cities, it will sensitize people, it will also help us build the institution of culture which this country is very, very rich in. Children, other architects coming there? Absolutely. In fact, there is a special theme, women architects. So at times we feel that women in the cultural spaces sometimes get lost and they are overwhelmed by the presence of men in the workspace. But the contribution of women in architecture is uncanny. In fact, I have a very biased opinion and I'm saying it publicly, and the bias is that I wish more women are the city planners,
because if city planning is ensured by women, safety, security, toilets, which way the face of the toilet should be, these are sensitive subjects which will be better reflected. So I want more women to be part of the city planning architecture. I'm biased, but I thought I will express myself. Anybody else? मैम इधर से Yes, ma'am. मैम मैं कविता जोशी हूँ जनसत्ता न्यूज़पेपर से। जी मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 9 दिसंबर को इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन कौन करेगा? क्या प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं? और इसके अलावा मैम आपने जो कहा कि 150 आर्टिस्ट को जो आपने सेलेक्ट किया है, क्या ये केवल इंडियन आर्टिस्ट हैं या फिर इंटरनेशनल आर्टिस्ट? इंटरनेशनल कुछ लोग जो उनकी एम्बेसीज और उनका देश भेजेगा, उसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं पढ़ सकते, वो रिप्रेजेंटेशन होती है जो भी देश अपना भेजना चाहे। लेकिन जो क्योंकि हमारे पास 560 एंट्रीज थी, तो 560 में से जब हमको चुनना है तो स्पेस का ध्यान रखते हुए और क्वालिटी वगैरह का, तो एक पूरी टीम है, एक पूरी कमेटी है, उन्होंने 150 लोगों को चुना है। यस मैम। I just wanted to know about the choice of the venue. What were some of the considerations for choosing Red Fort? Were there some other venues that you were considering? So the idea behind was to create culture spaces and utilize the existing culture spaces, which will showcase the background. Say especially if we talk about Delhi, for example, Delhi has certain spaces which are traditionally the cultural space, and we know whether it's freedom movement, pre-freedom movement, Mughal period, before Mughal period, Red Fort is a huge space, and that huge space, unless utilized, will go into disuse also. We want more and more such spaces to be used. And for your information, recently, right next to Qutub Minar, we have worked, I mean, we not as Ministry of Culture, but as a local MP representing my constituency and Delhi also, worked with the Lieutenant Governor, and we've created a space which was lying in disuse, which is the park area, which is called Qutub area. And the idea behind is to keep the culture spaces alive and bring the history of the city forward. Now people know about Qutub Minar in a way which may not be 100% accurate, but there's huge history much before Qutub Minar and much beyond Qutub Minar, which people need to understand and know, and much after it. So there are spaces, there is history which people have to be sensitive towards, and these are spaces and bits of history which we want people of city and the world to associate themselves with. मैडम आपने महिला आर्किटेक्ट की बात की है। One, sir. Just wanted to understand that the Kochi Biennale also exists already. The Kochi Osiris Biennale has been already in place for several years now, and it has been supported by the state government. Why is it that the Culture Ministry is not supporting that and maybe taking it to a bigger scale rather than doing something of its own over here? And the second question is, will this be a travelling Biennale? Will it remain in Delhi, or will it also move to other locations in the years to come? So far as Kochi Biennale is concerned, I don't want to comment on anybody else, but I would say that many attempts are made. The scale and the credibility what Government of India can offer, I don't think anybody else offers, and especially there have been issues with all kind of things. I don't want to get into that debate at all, but to put it in the right perspective, if Government of India is getting involved in a project, it brings the scale and credibility which this country and people require it. So there's a gap, and we are trying to fill that gap which others have not succeeded to fulfill. फंक्शन हुआ है ली कॉर्बिजर के साथ, वो चंडीगढ़ के प्लानिंग में वो भी शामिल थी, उनके सहयोगी थी, वो उनका 100वां साल है, उर्मिला चौधरी नाम था, यूपी की थी वो जी, तो उनके बारे में कुछ बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, हम आप लोग इसका हिस्सा
इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेन आर्किटेक्ट्स को। अरे उनको भी शामिल शामिल किया जाए। वो शुरुआत उन्होंने की, उनके बाद बहुत बड़ी लाइन है जिनके बारे में लोगों की जानकारी नहीं है। इसीलिए हमने ये विषय भी रखा है। 96 ईयर की शीला जी भी हैं, शीला जी वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब के लिए ये हमारे पास वो ये दिखाएंगे आपको मुग्धा जी। ये पूरी डिटेल है, इस पे पूरा रिसर्च है, पूरा काम हुआ है। और आप सबसे सहयोग की उम्मीद मैं करती हूँ कि ये अधिक से अधिक लोग शामिल हो, क्योंकि कल्चर कनेक्ट्स, ये हम सब जानते हैं। संस्कृति को, धरोहर को आगे लेकर जब हम बढ़ते हैं, जो भेदभाव का स्पेस है वो खत्म हो जाता है और सबके चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी आ जाती है। तो भारत की जो परंपराएं हैं, और भारत मैं कहती हूँ वो आइलैंड इसीलिए है क्योंकि हर मुश्किल के बावजूद हम लोगों ने मुस्कुराना सीखा और पॉजिटिव काम करना सीखा। ये हमारी खासियत है। माइंड, दैट्स व्हाट वी बिलीव, and we want to offer that space for every creative mind to work upon the creativity they possess. See, it's not just Delhi which will be part of this Biennale. Simultaneously, there will be things and events happening in Bangalore, in Mumbai, and NGM also. No, my query was on, since we'll be traveling Biennale, so next Biennale. No, we have not taken a call on that. Okay, thank you. If I can leave, I have to be somewhere else, and if all of you can stay for the presentation also. नहीं बता दिया, मगर presentation होती है ना, आप लोग अगर रुके तो अच्छा लगेगा। मैं माफी चाहती हूँ, मेरे को निकलना है, कहीं पहुँचना है। थैंक यू। 9 से 15 दिसंबर को हम लोग आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन का बिनाले कर रहे हैं। और उसके पीछे जो विचार है वो ये है कि भारत की जो परंपरागत शैली है और भारत के जो डिज़ाइन, आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़े हुए जो क्रिएटिव लोग हैं, उनको एक क्रिएटिव स्पेस मिले, शहरों को क्रिएटिव स्पेस मिले। और कहीं ना कहीं जो मार्केट है, जो एक कल्चरल स्पेस भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, तो वो अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। नॉलेज है, ज्ञान है, उससे संबंधित ज्ञान भी बढ़े। तो कहीं ना कहीं भारत कभी खोया नहीं था और जिसको पाया जाए, लेकिन हमारी परंपराएं कहीं ना कहीं धूल में छुप गई थी। तो ये उनके ऊपर से धूल हटाने का काम करें और जो रोशनी है, जो इतनी चमकदार हमारी परंपराएं हैं, इतिहास है, आर्ट, आर्किटेक्चर है, वो रोशनी सब तक पहुँचे और समाज जो है उससे जुड़े। मैं सबसे पहले तो अपने सब भारतवासियों को, ख़ास तौर पे पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के जितने लोग छठ मनाते हैं, सबको छठ की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। छठी मैया की जय। और जहाँ तक यमुना का प्रश्न है, वो यमुना के तो हाल बेहाल हुआ ही पड़ा है, आप सब जानते ही हैं। और उस हाल बेहाल में जो कारण है पोल्यूशन के, प्रदूषण के, वो पानी से संबंधित है। पानी की व्यवस्था जो है वो नहीं है। अव्यवस्था के कारण जो सुएज है, जो गंदगी है, वो यमुना में जाती है। डिटर्जेंट और जितना गंदा पानी है वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स की व्यवस्था नहीं है, उनको अलग करने की व्यवस्था नहीं है, और सारी की सारी गंदगी को यमुना में डाला जा रहा है। यही कारण है यमुना के प्रदूषण की। जो दिल्ली के मालिक हैं वो शायद इस अव्यवस्था से अवगत नहीं है, क्योंकि शीश महल से बाहर निकलते तो उनको सब दिखाई देता कि दिल्ली के क्या हाल है। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। जय।